which offer, of course, in-person as well as distance learning program for India. I mean, not just for India, and the distance learning program is actually for all over the world, which people from India can also subscribe to. So some of the universities like Sheffield University, so there's SHAR there, SCHARR, and there's University of York, which are some of the prominent universities in this working in this domain. Okay, great. Yeah. So we discussed about how about the health and the health economics in detail. Now, as you're also a student of economics in general, right? So, Right. So there are two questions again. Like first, I would like to want to know, what are the different areas where student can step into economics? Also, we also while interacting with many students, there's one common question that, sir, I don't like mathematics, right? Can I pursue economics? Now, I also want you to tell us, like, or give insights on when we say mathematics. Students have this understanding of mathematics as calculus or coordinate geometry or algebra. But which part of which branch of mathematics that you use more and more in economics? And Right. definitely, what are the different fields available for a student from pursuing economics? Sure. Yeah. So I think I'll just take a moment and answer it a bit differently. Okay. So I want everyone to take a pause and just look around the room they are sitting in. Just just take a pause and look around the room in which you are sitting in. Okay. So yeah, okay. I'll give you 5 more seconds. Yeah. Okay. So the chances are, first of all, you are seeing this webinar session either on a laptop or mobile. Right. Now, and you would have purchased it at a certain price. Right. So now there was some economics already being involved in that. Now, in my room, I see a table on which this laptop, I'm taking this session from a laptop and it's sitting on a table. So that laptop has a price, and that table also has a certain price. I can also see certain monitors, which again are priced differently. I see a cupboard with a glass. So that glass had a certain price. The cupboard had a certain price. Keyboard, I can see a keyboard which has again a certain price. So economics is, I think, if you look around, there's hardly anything left which does not involve economics, directly or indirectly. So, and irrespective of whatever you are selling, whatever you are developing, at some point you will need to decide that what is the price that you want to pay for it. Right. Some of the free platforms, like if you think Facebook is free, maybe technically it is free for usage, but you are paying it with your time, and you see all the ads on the side. Now there is a cost to the company who are placing the ads on the side. Right. If you think of the sports, we all know how expensive IPL auctions are. So then how do you decide that, okay, this player is worth this much and this player isn't worth this much? And in between, we see in between a cricket match, there are ads. So you see that all those ads are, 10 seconds sold in 10 seconds time slots. And each of those 10 seconds go for multiple crores. So there's hardly anything which does not involve economics. So so I think role of economics is quite broad, and you can apply it almost in practically any field you can think of. Where I would say my peers or my batchmates from IITs or my immediate juniors, or they have gone. So some have joined health economics like me. Some are working in investment banks. So investment banks are different from our regular banks, which we go to for cash withdrawal or account deposit or those kind of things. Investment banks are more like, if you see recently Facebook invested in Geo, Google has invested in Geo, so you would have seen that all that news. Now, someone would have decided Geo's valuation, right? What was the value at? So if some Facebook paid roughly, I think 5 billion or something for 9.99%, how did they arrive at that value? Why not 10 billion? Why not 2 billion? Someone would have done all this analysis. So those are more your investment banking, private equity side of people
who are doing this kind of valuations. Then I have friends who are working in IMF, International Monetary Fund. They are making policies there. We have a college senior who is working with RBI, so making policy decisions there. Some have, I think some are working in insurance as well, including reinsurance. So there is something called reinsurance, which is insurance of the insurance companies. Okay. So there is a company, you can look it up. So there is a company called Swiss Re, which is one such reinsurance companies. So the insurance companies then hedge their risk with the reinsurance companies. So it's a bit funny concept, but yeah, it is. And they are quite big in nature, and big in volumes. So yeah, I think those are the top. Yeah, one of my friends is again working in mergers and acquisitions. Some of my friends, didn't pursue their career in economics as such. They got into business. They developed apps, which one of his companies got acquired by Paytm. So, yeah, so these are some of the rough profiles of my batchmates. Okay. And Hemant, like, what kind of trend do you see, or like, because the students who are watching it probably they will join the industry 10 years back, and for in your case, like you were the pioneer or one of the few who were started in the health economics. So, what kind of trends do you see for the students? Like, what are the trends you see in the field of economics which students can, Right. which will help them to? So, yeah. So I think coming to within health economics, I think the trend is going to increase in India. So healthcare is getting more and more expensive by the day. So there will be increasing pressure by the government, by the people on the pharma companies to demonstrate their value to the customer. So the role of health economics there will, I believe it will quite increase a lot. Now, coming to the trends overall, I would say I foresee a lot of automation coming through in almost every discipline which I can think of. There are certain works which we are doing right now manually, but I'm believe that in 5 to 10 years time frame, those works will maybe automated. So you probably need to upskill ourselves. So you have got a window of 5 to 10 years where we need to upskill ourselves, or we might be replaced by robots, if you like. Same thing, I think, if you see, Google has Waymo, Tesla has a near perfect self-driving version. So we already see that, there are a lot of self-driving cars which can be operated without the need of a driver. Yeah. They are already near perfection, if you like. So maybe in few years it will come abroad. It will start getting sold abroad, and maybe in 5 to 10 years it may, who knows, it may start getting sold in India as well. So, so again, anyone who is into driving today probably would need to upskill themselves, or they might be replaced again with a robot. So this is where I feel that coding has become like the new alphabet. No one says that we don't need to learn ABC. No one says that we don't need to learn numbers 1, 2, 3, 4. I think coding is becoming that. You don't need to be a writer. You don't need to be a mathematician, but you need to be at least a basic coder who can understand the basics of the coding process. So I think that is one skill which is going to become almost as important or as basic as the learning alphabets and numerics. So that is one thing I would definitely advise the students to learn, irrespective of whether they want to go in design, art, economics, maths, philosophy, whatever. But I think the basics of this coding process, which I think will take them 2, 3 months to understand, that is going to be very important in whatever they do. Yeah. Nice. And Hemant, I think, like, what kind of maths we need in economics, and what kind of maths you use in economics? Can you throw some light on that? Sure. So I think mostly it's, I won't call it very complicated. It's probability and statistics. Those are the two main things which we need to, which we use on a day-to-day basis.
Probability is another subject which I feel, goes beyond economics or beyond maths. You need to, we use it consciously or unconsciously in many of our own decisions. Let's say, let me think of an example. Let's say we want to decide to go for a movie, and we are thinking, this movie might be good. So you subconsciously assign certain probabilities that, okay, this movie is likely to be good enough, so I should go for this, or this movie is likely to be bad enough, I should not waste my time and money there. So that is I acknowledge it's quite a poor example, but I'm running short of good examples right now in real life. But probability is probably one of the things which is very important. Statistics, quite a bit. But I think more than that, it's, I would say, the most important skill which we feel is the willingness to learn. A lot of people make this mistake that they think they know, but a lot of time we don't even know what we don't even know. So there is this matrix which is commonly said that you don't know, and you many times you don't know what you don't know. So, and that point, if someone is trying to train you or someone is trying to share his learning or her learning with you, you need to be receptive to that, and you need to have a willingness to learn for those concepts. And in general, I would say, I mean, things are changing so fast. Irrespective of any industry you are in, you need to continuously upskill yourself, be it in any domain. So if you think about in this way, almost 10 to 15 years back, we would go to a bank. They would probably, use the typewriter to uh, enter our passbooks and keep a tally of our accounts data and everything. And in the last 15 years, everything has been computerized, right? Now, anyone who refused to learn computer would probably be out of job by now. So every bank employee who joined the bank 15 years back, they were forced to learn computer. And those who were able to embrace it, embrace the change, embrace the learning, they would have grown in their career. Those who resisted that, no, I would still do it by paper, pen and paper, they are probably, sadly out of job by now, probably. So that is one thing I think. I don't see that innovation is going to slow down. If anything, I foresee that it will pick up. We are going to see much more rapid change, which means that you should be basically a student of life and student for life, so that you can continuously learn whatever is there testing. So whatever you learn today may get outdated by 10 years. So what do you do after 10 years? In this whole 10 years, you have a chance to upgrade yourself and be ready for the next 10, and so on. Nice. So the learning is that keep on upskilling yourself and keep learn this new age skills. So I will just take few questions which have come in the Facebook Live. So we have a participant, Natasha, which is relevant to this question, this discussion. She wanted to know, is there any particular coding language that a final year student should learn that can help him or her especially in the current scenario? What's your suggestion on that? Sure. So the good thing about coding skills is that it's quite transferable. Once you get the hang of it, you are able to switch across platforms. So irrespective of whether you learn R, or you learn VBA, or you learn Python, or you learn SQL, if you start learning and getting the hang of one programming language, understand that then it is just a matter of changing the commands. So every language has its own syntax, its method, but once you start getting the algorithm correct, you can easily transfer your learnings from one platform to another. Right. Makes sense. So I think Natasha, you got your answer. So learn any language and be good on it, and then you can actually transfer that skill to the other languages.
Great. So Hemant, like the next question for you is for us from the audience is that like we really want to understand uh, what are the skills or what are the skills that you feel that if a student is specifically aiming for pursuing a career in economics, what are 2 or 3 core skills you feel is important Mhm. for them, or important skills that they should develop? Okay. So I think this also goes back to your earlier question of maths. But I think someone's maths should be good, and by maths I mean basic BODMAS and probability and bit of statistics. Okay. You don't need to know calculus. You don't need to know the complex versions, and most of the time it's quite basic. But it's more about the application of how quickly you are able to apply the basics and how well you have, how good a grasp you have on the basics, which makes a difference. So I think maths is definitely one of this thing. Other thing I would say is probably finance. You need should be able to understand how money works, and that is something you will also be taught on the subject. So it's not like you need to know everything upfront. So you are going to study economics, then you will learn something there. So you'll probably learn about the systems, but I think most importantly, I would again reiterate, have that curiosity to learn. Um, understand how things are moving around you, understand how what RBI does, understand what IMF does, understand what is repo rate, how are banks deciding on interest rate, how they are charging credit cards, so understanding just the systems around us and try to see why they have been designed in a certain way and how you can maybe improve on them. So just I would say understanding of the whole system, try to develop that. Thank you. Uh, now, Hemant, like I think you have a very interesting story in terms of how you selected health economics, right? Mhm. And I feel like this will be applicable to most of the students. Many of the careers they might not have heard about it, right? So, Right. so like how you like, what is your suggestion on this for the students who, Mhm. like or for parents as well who are watching? Mhm. Is that when you select a career which is not Mhm. very trending right now, or which is not very known right now, but Mhm. how to really understand whether this will have a scope in the times to come, Right. and how to really adjust to that, because I'm sure like when you took health economics there might Mhm. have been a lot of objections from the family members or from the peers around, Mhm. because this was not heard. People have not Right. heard about this career, right? But Right. now you can see it is one of the it's trending, and we need more and more Mhm. health economists. So what is Right. the suggestion, because you took this decision when you were in class 12, right? So Yeah. I mean, how what kind of what suggestion would you like to give to the students Sure. and parents? Yeah. So, see, I think most important thing here, which I feel is exposure. What are the things you are exposed to? So, if I talk about myself, till class 5, I was studying in Dhekajuli, which is we did not had much exposure there. You are probably aware of that. So the only thing we saw on TV was Sachin. He was everyone's idol, and everyone wanted to be Sachin Tendulkar. Like that was the goal for almost every kid, because we had exposure to just him. That was the best thing we could see, which we thought we may become. So as we went out, we also saw then many other things. Now we are seeing. Uh, then I went to Jodhpur for my further schooling, and there I got exposed that okay, there is something called IITs. So then I decided to join that. Um, Based on my decision, there were you know that so many people from our town then decided to go to Kota for IIT JEE coaching based on our because you and I went to study there. So and they would have never thought of going to Kota for JEE coaching had you and I not gone there. So it was a matter of exposure that okay, this is also another route which we can take. So so at this point, I would say try to have exposure to as many fields as you can. Uh, don't stereotype yourself. I think that is one of a very common mistake which I see across people, that they stereotype that okay, I am a programmer,
I am a designer, I am a photographer, I am a, entrepreneur. So don't stereotype. Be willing to open to learn from all the fields, and then I would say that explore different options, and don't feel pressured enough that at age of 14 or 20 you have not figured it out what you want to be. I mean, we are in our 30s right now, and we are still figuring it out on the go, what we are liking. And our interests change. 10 years back there was no career like a Instagram influencer, Yeah. so how could you even plan for a career which did not exist 10 years back? So things are rapidly changing. So, but yeah, I would say get exposure to different fields, and that would help. I'll just take another example. So I have this mobile in front of me, with me. So now let's say tomorrow, why I also say exposure is very important is, let's say 5 years down the line, you think that you want to make mobiles, Hmm. okay, and want to sell it. So now what do? There is no college in the world that I know of which will teach you to make mobiles and sell mobiles, Hmm. right? So you probably need to figure out, okay, what are the different steps. So you first see that, okay, we need an operating system which is Android or which can be Windows. So you go there, you talk to them, you tie up, make tie. Then you see that, okay, this mobile has a glass, so you go to a glass manufacturer who can give you glass. Then you see there is another steel body, which then again you go to a different manufacturer to give you steel body like this. Then you go to a designer who will tell you where to place the cameras, where to place the flashlights. So by now you have to speak to an operating system guy, you need to speak to a glass guy, you need to speak to a metal guy, you need to speak to a designer who can place the buttons for you. Now you need to speak to a chip guy who can program the chips for you. You need to speak to a battery guy who can make the battery life last long enough. Once you have developed this product, then you again need all these machines who can produce these items, and you need people to assemble. You need to have a distribution channel through which you can sell them out, be it online or offline. So there is no college which is going to train you for this, right? So but if you were interested enough to learn different components, you also need to understand the accounting side, that what's the profit margin I should keep, how much should I price it out. You need to understand the economics of that. You need to understand the legalities, that if this mobile bursts tomorrow, like we heard few years back, Samsung mobiles were bursting in airplane, then there will be legal cases on them. What happens when there are legal cases on you? So you need to understand the legal. Now one person will never study all of this in their lifetime, they cannot practically, but having exposure to different fields will allow you to have meaningful conversations with each of the specialists in the field. So that is something I feel is very important, that you should be able to have a conversation with different kind of people whom you may need to work with. Yeah. So exposure, I would say, is very important, and the willingness to learn that. Don't hold yourself back that I am a designer, I am a developer. Just be willing to learn whatever you can from the person in front of you. Right. So Hemant, but like, what if, like, for example, if I am interested to explore a field of, let's say, in your expert area is economics, right? So if any student, what advice do you have for them if Mhm. any student wants to explore the field of economics? And let's say the child is in class 11 and 12, and they want to understand the economics. So what are the books, Mhm. or can you suggest some books, or can you suggest some ways via which they can start the exploration? Yeah, sure. So, see, I think the best thing about today's time is that almost all the knowledge is available right on our fingertip, on our mobile, right? So, the best skill right now is how to learn Google things up and find the relevant information. So, this is one of the, I would say, best skill in itself, that you are able to identify in this tons of data out there. You are able to identify the meaningful bit, and you are able to synthesize that information in a way which is useful for you. Having said that, there are now also courses which are
being available for free. I think MIT has its course, not Coursera, it has some courseware, I can't recall the name. It has some courses on it. Coursera offers a lot of courses in various fields. There are other platforms which I'm not sure if they charge or not. There are an academy and other platforms so which are also offering education. So education, I think there's so much content out there that there's as much content available as people are willing to learn. And then in terms of book, I don't have a specific recommendation right now, but I would probably start with some general readings on microeconomics and macroeconomics. Okay. So that should be that could be a good starting point. Okay. Mhm. So I think we're just finishing off. Like time is approaching. So just like last two questions for you, Hemant. Mhm. One, like we want to know what are the how do you spend your typical day? What's your typical day is like in your Mhm. company? So what Sure. all typical things you do? Sure. Thanks. So I think one of the good things about this domain is that no 2 weeks are same. You need to learn every time. So as health economists, we are working on new diseases every time. So right now I might be working on cancer, but 3 months down the line I might be working on a heart disease. So I need to learn continuously, learn about new diseases, new modeling techniques. So that upskilling process is in a way um, part of my work, if you like. So need to do that. Um, I think. So what was the other part? Uh, Yeah. So what is the typical day in your life? So yeah. that's one part So to do is yeah. researching on Mhm. different health diseases. What Yeah. else do you do in a typical day? Yeah. So we are consulting company. So we provide services to primarily pharma companies. And so right now our client base is spread quite across the world. So we are serving clients in Australia, which is like 4.5, 5 hours ahead of us, to US, which is 10 hours behind us. So it's a, I would say, bit of a challenge within yourself to manage clients from multiple time zones. So we try to manage their expectations, right? Then I would, for me, again, the role would vary by the number of years of experience and also your current responsibilities. But a lot of my time is involved in the admin components of the things of running a business. But a typical health economist, they would probably be, reading a lot about diseases, about modeling papers. Probably, I would say half of their time goes in that. In the other half, they would be either implementing that modeling in a programming software. Commonly, Excel is used, or they would also be writing up reports of what they have done. Now, the last bit is quite important actually. When I say writing, I think as a country, we need to do really more on the writing part. All the writing we are exposed to is, we receive a question, we receive an answer from our teachers, we mug it up and we vomit it out on the answer sheet. So we never activated the writing part of our brain, that kind of left unused. Even when we had to write essays in our class 9 or 10th exam, there are again essay books from which we can mug it up and we can vomit it out. So, and I am guilty of the same. So I'm no saint here. I am very good at mugging. I was very good at mugging it up and vomiting it out. But when I joined this role, I realized that the writing part of my brain kind of never got activated. So I would encourage the students that don't. Okay, maybe you need to worry about marks, but also develop your writing skills. Yeah. Articulate your thoughts. Write. Don't try to Google up and copy. Don't try to just go on Wikipedia and copy. Go there, understand the concept, and then try to write it on in your own words. It will be challenging at first, but because it will be challenging, you will also be learning something new. Anytime you are facing a challenge, you should also see the upside that maybe you are trying something new, which is why you are facing a challenge. If you would have just done the standard thing, you would not be facing a challenge.
Right. Mhm. Makes sense. Yeah. I mean, it was amazing listening to you, Hemant, throughout. Yeah. Like, your Mhm. journey from a small town in Assam to becoming an MD of a multinational company and leading this. Your Yeah. journey and your risk that you have taken by studying health economics. Right. I think there is a lot of learning for students listening to your journey, and that's the reason why we do mentor talks. Mhm. Because I think, as you mentioned, that everything is available in Google, but I think your journey and things like this are Yeah. absolutely absent, right? And that's the reason Yeah. why we thought, like, Yeah. bringing an experience of people like you will be very Mhm. helpful for students. I Yeah. just wanted to Thank you. sum up a couple of points before we really Mhm. conclude. Is that, like, Mhm. one thing was a few learning which I can definitely feel which is a takeaway for students is Mhm. definitely one. First is that you have joined a field which was not which was very new at that time, but you can Yeah. understand the importance of it, and you became the early adopters of it, and now you are kind of Right. a leader in that field, right? So Right. that's learning, Mhm. because most of the jobs that the students who are in class 11 and 12 would be probably entering, it doesn't exist, right? So we are Right. preparing you for a future which does not exist. I mean, you cannot really imagine, but Mhm. taking your chances and going to a career which really excites you, or which is Mhm. actually futuristic in nature, will be very, very helpful. So for parents, Mhm. please feel very comfortable, understand the field, research the field. I think Hemant is an excellent example of taking risk in a field Mhm. which was not trending when he started, but now is Mhm. leading. He's Yeah. a pioneer. So that's an advantage when you do that. Mhm. Second, learning, as Hemant mentioned, like, the future is changing very drastically. Mhm. Automation also will have an effect on the field of economics as well, right? Mhm. And so for other matters, so learn, and the most important skill is learning, right? Mhm. Learning how to learn will probably be very helpful. And Yeah. as Yeah. Hemant mentioned, that do learn coding skills, right? So, Yeah. and it really doesn't matter as per your experience, right? Mhm. Third, I Yeah. think for economic students, I think a very interesting takeaway was, you need mathematics, but you Yeah. basically need, as Hemant mentioned, BODMAS or probability or statistics, right? So Mhm. it's not Yeah. that hardcore maths of drawing geometry or Mhm. doing the calculus, right? These are Yeah. all are important, but then these are not required. So student Mhm. who are in class 11 and 12, a very Mhm. good news for you all, because Mhm. Hemant, I just wanted you also to know, I mean, this is very Yeah. interesting, a development that is done by CBSE. So CBSE Mhm. is now offering a subject called applied mathematics, in which Okay. it's mainly focusing on statistics, probability, and the basic of calculus and others, so that they Okay. don't have the That's students good. who are aspiring for economics. And as you know, most of the undergrad programs, or if you want to Mhm. study economics honors, they want you to take maths. So those students Mhm. can actually go for applied mathematics than for general mathematics. Okay. Okay. Yeah. That's good to know. So, and the Um. last, I think, very interesting takeaway is, like, be curious, learn something, and right. I mean, if you Yeah. really want to Yeah. learn something, you can really learn, right? So, Hemant, Sure. Yeah. these were the 4 or 5 takeaways which I can Yeah. actually sum up. Yes, Mhm. definitely develop your communication skills. That was again another takeaway. But Hemant, Yeah. before we conclude the whole session for today, Mhm. today's talk, I Mhm. want to request you to tell, like, what kind a message for the school students and the parents, Yeah. how you feel that they can actually think of a career, because they are at a stage where Mhm. they also want to explore, they also Mhm. want, they're confused, right? I can Mhm. sure you can relate to our times when Sure. we were confused. Yeah. All right. Yeah. So can you just guide, or can you just share some Yeah. tips or share some learnings from your journey, Sure. which can Uh, specifically help them in selecting a career? Sure. Sure. So, yeah, first of all, thanks, Dinesh. I think you have excellently summed up the learnings from this session. Uh, just, I think, see, when I just take a few more minutes. I So know we are over the time. it's absolutely So earlier on, when we were used to watching TV, there was just Doordarshan, right. and we just saw whatever was coming on Doordarshan, whether we liked it or not. These days, if you have a Netflix account, you spend 15 minutes scrolling through the Netflix account, deciding what to watch. Happens with me. So the confusion is not the confusion is coming from a privilege of choice. It's not coming from being forced to do something. So Right. that is a very first of all a happy situation to be in. That we are getting confused because you have so many choices now, and the choices are evolving all the time. Uh, the second thing, I think you touched a very important point on the risk one. I think human lifespan is quite long enough to take few risks in terms of this kind of careers. So even if so if you think of it,
lot of people whom we admire today, who got successful, very, very successful. Steve Jobs, the KFC guy. The KFC guy got his success at, I think, age of 60 plus, you know. There are so many people who have faced, Jimmy Wales from Wikipedia. He was in his 40s, I believe, when he tasted his success. Uh, so don't think that, you know, you need to be only the Mark Zuckerberg who needs to be successful at the age of in your 20s. They are not the norm, they are rather the exception. Most of the people who have got successful were in their 40s. They had tried different things, they failed at many different things. So, and embrace your failure. I think once you convert your failure into fuel, I think your journey will be unstoppable. You know, so in our society, particularly, you know, failure is not taken that positively. Right. But that attitude needs to change. First of all, you know, you only fail when you are trying something new. If you do keep doing existing whatever you already know, you're not going to fail, but then you are not going to learn something new as well. So change that attitude to failure, embrace it. uh, doesn't mean that you fail every time, but whenever you fail, just see where you have gone wrong, try to correct that, and, you know, embrace that, and convert that into a fuel, which fuels your desire to, you know, for further success. And I think that will be great. Just I'll add one last line. So, you know, there's this saying, you know, we overestimate what we can achieve in a day and underestimate what we can achieve in a lifetime. So you may not be able to fit many things in the day, but you know, over a period of time, if you're consistently working hard, uh, 5 years down the line, you would be surprised at what results you may produce, even though day by day you see nothing changes, and a year back nothing remains same. Wow, very nicely summed up. You know, with the line. Yeah. Thank you so much, Hemant. Once again, on behalf of the whole team of Career Spark and all the students who have participated, thank you so much. So this video will be available in our Facebook, as well as we are creating this channel where we will be uploading all these videos. So anyone tomorrow, if they Google and want to understand health economics, I hope this talk will really be give them a lot of insights from a person who has done health economics, right? So thank you once again, Hemant, for taking out your time. Thank you all the participants who have joined. We will keep on bringing this amazing insights from amazing people, right? And we have learned learned a lot from your journey, Hemant. It's really inspiring to see you from you know, from a town to a MNC company, and I'm really sure like it's full of as you mentioned in the last time, you converted the failure into fuel, right? So I think that's the takeaway for me for tonight. Thank you so much, Hemant, for your time. Thank you everyone for participating. I hope we covered most of the queries, and I hope you will understand it's not possible to cover everything in 1 hour session. And the whole idea of this purpose, you know, the whole idea, as Hemant mentioned, that the idea was not to get more answers, but to ask more questions towards the end of the day. If you're going up with a lot of questions, a lot of queries, I think we were successful in this. Thank you once again, Hemant, for sharing your time. And thank you, Dinesh, and thank you everyone for joining in. Thank you. Thank you. Bye. हाँ हेलो भैया, रुके रुके, अभी वो लाइव स्ट्रीम खत्म हो गया है, 2 मिनट रुके हैं. Is live now? Are we still live? Just a minute, मैं चेक कर लेता हूँ. So भैया, मजा आया? हाँ, अच्छा था. एक सेकंड, मेरे को एक फेसबुक पे अभी क्या दिख रहा है? ओके, पता नहीं, फिगर इट आउट. ओके, पता नहीं है. ये बंद हो गया क्या? हाँ, ये फेसबुक लाइव बंद हो गया अभी, वो कंफर्म कर लिया मैंने. ठीक है ना? ओके, लाइव बंद हो गया. अब हम लोग बात कर रहे हैं, वो हमारे बीच में रहेगी वो लाइव. So सही है, मजा आया भैया, काफी इंटरेस्टिंग है. ये सब मुझे पता नहीं था. ये वाला जो आपने स्पेसिफिकली जो बात बोला ना, कि मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था हेल्थ इकोनॉमिक्स में. मतलब जो आप मुझे उस दिन भी बोले थे ना, डॉक्टर वाला पॉइंट, इट वाज रियली अमेजिंग टू मी, यू नो. वो बहुत खुल गया. इनफैक्ट मुझे क्या लग रहा था कि यू नो, जो लोग एक मुझे बात बताइए भैया, जैसे कि किसी ने अगर सिर्फ
बायोलॉजी पढ़ा है, तो उसको भी हेल्थ इकोनॉमिक्स में फ्यूचर है क्या? मतलब वो भी ज्वाइन, या जो हेल्थ इकोनॉमिक्स के जो प्रोग्राम है वो बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? देख, प्राइवेट कॉलेजेस तो है ना, सबको ले दे लेते आर हैं। क्वाइट मनी ओरिएंटेड, हाँ। तो दे विल टेक एनीवन इन फ्यूचर। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे वही जो मैं बोला ना, विलिंगनेस टू लर्न, वो कुछ लोग आते हैं एटीट्यूड से कि हमको ऑलरेडी पता है, मतलब, या उनको अगर आप सिखाने जाओ तो हाँ हाँ कर लेंगे कर लेंगे, तो बाद में वो स्ट्रगल करते हैं। और कुछ लोग स्ट्रगल करके एफर्ट डाल के वो चीज़ें सीखते हैं। तो अभी ये मैं एक एग्जांपल मैं सोचा था लूंगा, बट अभी चांस नहीं मिला, कि तुम भी देखोगे तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कि काफी लोग आईआईटी से भी दे आर नॉट सक्सेसफुल इन द वे सक्सेस इज बीइंग डिफाइंड इन द वर्ल्ड, जबकि काफी लोग रीजनल कॉलेजेस से उनसे बहुत बेटर कर लेते हैं, यू नो। तो वो क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमें वो सिखाते हैं ना कि आईआईटी में घुस जाओ सेट है, ट्वेल्थ कर लो सेट है, वो तो धोखा है। एक्चुअली उन्होंने सेट कर लिया अपने आप को। सो दे हैव स्टॉप्ड their desire to learn kind of Drops down because of that. fall down. Yeah, they were not challenging themselves as much as they would have in their JE days. Whereas जिसने रीजनल कॉलेज से किया था, और ऑब्वियसली प्रोपोर्शंस में बहुत कम होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका मतलब वो था कि फायर था उनके अंदर, तो दे आर डूइंग अमेजिंगली वेल राइट नाउ। तो वहाँ मुझे लगता है कि सेम विद कमिंग टू योर क्वेश्चन बायो वाला, अगेन आई थिंक इफ दे हैव विलिंगनेस टू लर्न, और कुछ नहीं तो पहले कहीं पे इंटर्न बन जाए, वंस दे स्टार्ट एज इंटर्न। लॉट ऑफ पीपल, आई थिंक अभी एक बंदे को मैंने हायर किया है, ही स्टार्टेड इन नोवाटिस एज ए इंटर्न। कुछ लोग तो है ना, ऐसे लगता है कि जैसे मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मास्टर्स किया मैंने, मेरे को इंटर्न दोगे, मतलब ईगो पे ले लेंगे। हाँ। हाँ, कि एक मास्टर्स को तुम इंटर्न पे कैसे रख सकते हो। वेयर एज दिस गाय जिसको अभी मैंने हायर किया है, उसने 6 महीना इंटर्नशिप किया नोवाटिस में, ठीक है। देन ही गॉट ए फुल टाइम जॉब देयर, 5-6 साल वहीं काम किया, एंड देन नाउ ही इज, आई थिंक ही इज डूइंग, आई नो, बिकॉज मेरे को पता है, मतलब 6 साल का एक्सपीरियंस है उसका, ही इज डूइंग अबव हिज पीयर्स, मतलब ही इज अबव एवरेज गाय। 6 महीने का उसने जो रिस्क लिया इंटर्नशिप हाँ, लेने का, और वो सीखने का राइट जो अर्ज था वो उसको राइट आगे लेके गया, ना कि राइट आपका डिग्री राइट नॉलेज। राइट। तो इसमें ना अभी क्या। हमने भी इस बार हायरिंग की ना, तो डिग्री का रिक्वायरमेंट हटा दिया कि ऐसे भी एक्सपीरियंस प्रोफाइल्स थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर 5 साल के बाद भी आप अगर डिग्री यूज कर रहे हो ना, तो आपने 5 साल ही पढ़ाई की ना, 5 साल तो अब हो गया आपका वर्क एक्सपीरियंस। अब 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद में अगर आप उससे पहले वाले 5 साल यूज कर रहे हो, तो मे बी यू हैव नॉट डन इनफ इन दिस 5 years। तो दैट इज वेयर, इनफैक्ट इनफैक्ट मतलब having said that, on an average, obviously IITs will do better, but you will always find people from regional colleges who are doing better than some of the IITs. तो भाई जैसे आपने जो ये बात बोला ना कि लाइक लोग चैलेंज नहीं लेते हैं, लोग एक रुक जाते हैं, इसी को Mhm, ना अभी एक 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 स्टडी है, मतलब mhm, स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर है कैरल डवेक, उसने mhm, इसको नाम दिया, मतलब शी इज एक्चुअली स्टडीड ऑल दोस थिंग, एंड mhm, इस एटीट्यूड को बोलते हैं फिक्स माइंडसेट। अच्छा, और जो आप जो बोल रहे दूसरा वाला, उसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है। ओके, तो ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट यही था। उसने क्या किया, एक स्टडी किया, जैसे आप आईआईटी वाले बच्चों का भी आप देख लो, मतलब हम्म अगर, मतलब मैंने तो बहुत देखा है ये चीज को, कि हम्म अगर हम लोग कोई आईआईटी वाले बच्चे हैं जो भी आईआईटी के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर उनके साथ हम लोग कुछ सवाल तर्क वर्क करें ना, तो उसमें से 10 में से 2 बच्चे लोग बात ही नहीं करेंगे, मतलब 2 बच्चे ही आपसे इंटरेक्ट करेंगे, बाकी 8 चुप रहेंगे, अगर पब्लिक हो रहा है तो, क्योंकि राइट उनको डर है गलत होने का। राइट राइट, उनको डर है, और वो हाँ, चैलेंज भी लेंगे तो पब्लिकली नहीं लेंगे, मतलब उनको राइट, वो, मतलब फियर ऑफ पब्लिक, फेलियर, या फियर हाँ, ऑफ, हाँ, फियर ऑफ लुकिंग स्टूपिड, राइट राइट, वो हाँ, बहुत ज्यादा वो है। रहता है, सही बात है। डन वेरी ब्यूटीफुल वर्क। तो अभी मैं हम्म, एक स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर के साथ कर रहे हैं हम लोग एक काम, जिसमें ओके शी डज द अप्लाई द होल थिंग इन मैथमेटिक्स टीचिंग। तो अभी ओके हम लोग एडिजिनी में क्या कर रहे हैं ना, कि इनकलकेटिंग दिस ग्रोथ माइंडसेट इन द क्लासरूम। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को हमने एक पजल दिया, अगर वो हम्म पजल को, अगर वो टॉपर है ना, तो वो हम्म कोशिश करेगा कि वो चुप रहे क्लास में, मतलब हम्म वो फिक्स माइंडसेट हो गया उसका। तो हमें वही हम्म वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और ये स्टडी मैंने भी किया।
I interviewed around 25 people who topped in Assam के बोर्ड में, एंड जो 12th में जिनका फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है। अच्छा। और ऐसे भी Okay. 25 को तो मैंने इंटरव्यू किया है, तो 25 को मैंने इंटरव्यू किया जिन्होंने अच्छा भी किया, एंड द कॉमन ट्रेट व्हिच आई फाउंड वाज दैट उनके अंदर वो था कि उनको इतना ज्यादा पब्लिक का वो मिल गया ना, मतलब फॉर एग्जांपल फॉर यू एंड मी, we cannot afford to be fail in the eyes of people. Actually we are failure, but we cannot afford to fail in the eyes of people. अपने डिगेजुअली का भी यही कॉन्सेप्ट है, और इनफैक्ट हर जगह यही है कि लाइक अभी उनके लिए लाइक आप क्या कर रहे हो हेल्थ इकोनॉमिक्स में या मैं क्या कर रहा हूँ एजुकेशन में, वी आर लाइक अ फेलियर बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल ब्रांड जिसका वो उनका उम्मीद था। मतलब वी आर फेलियर बिकॉज दे डोंट नो आवर इनकम। दैट्स आल्सो हाँ, मतलब frankly जैसे ही वो फिगर आउट सी आई वाज in the absence of other metrics or rather हाँ, इसमें तुमने क्वेश्चन मेरे को भेजा था वो कि मेरे ख्याल से हमने सेशन में कवर नहीं कर पाए थे, स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज का मतलब। तो जो स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज को जो लोग देखते हैं ना कि वो है कि पैसा कितना बनेगा। मुझे लगा, मैंने इसलिए स्किप कर दिया उसको कि मुझे लगा कि तो बात जा नहीं रहा उस तरफ। हाँ, ये हेल्थ इकोनॉमी अगर क्या स्कोप है तो स्कोप मतलब पैसा। और अच्छा कर रहे हो, चाहे टैक्स बचाओ के कर रहे हो या टैक्स दे के कर रहे हो, तो तुम अच्छे हो। तो वो ऐसे इसमें मैं प्लान था कवर करने का, हो नहीं पाया कि स्कोप के कई डेफिनेशंस हैं, स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज के। जैसे मैंने बोला कि पब्लिक हेल्थ में आप हजारों लाइफ एक साथ अफेक्ट करते हो, ठीक है। तो अब मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमने एस्टिमेट किया कि उसको फंडिंग मिल जाएगा उस प्रोजेक्ट को, तो हफ्ते का 3 से 4 लाइफ बच जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जहाँ पे 2 करोड़ पॉपुलेशन है, फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट के लिए 36 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में $7.2 मिलियन सैंक्शन भी कर दिए, ठीक है। तो अब जितने टाइम में अपन ने पहली बार बात करी 2 हफ्ते पहले और आज में 7 लाइफ्स तो बच चुकी हैं, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो ए सक्सेस। ओह यस करेक्ट, ठीक है, बट ये सक्सेस को आप हमेशा वो ऑब्वियसली सिर्फ मेरा ही काम नहीं था, उसमें हजारों लोगों का काम था, लेकिन 7 लाइफ्स तो बच रही है। हाँ, तो सक्सेस की कई डेफिनेशंस हैं, बट द वन कॉमनली अंडरस्टूड इज मनी, the other commonly understood is power. If you are an IAS, you may not have as much money legally, white वाला, लेकिन you will have power, which is, और politician, legal तरीके से कोई पैसा नहीं है, बहुत ही ना के बराबर, but you have the power. So I think, but वो वाला एस्पेक्ट डायरेक्टली नहीं दिखता है। कुछ लोगों का दिख जाता है, जैसे सर्जन है, अगर सर्जन ने जान बचा ली तो दिखता है कि हाँ इस सर्जन ने जान बचा ली, बट वो सर्जन तो लास्ट स्टेप है। साइड में नर्स भी काम कर रही थी, सफाई वाला सफाई कर रहा था, ऑपरेशन वाला ऑपरेशन किया, बिलिंग वाला बिलिंग किया, तो हजारों लोगों का एफर्ट था कि वो सर्जन लास्ट में वो कुछ कर पाया अपना जादू। बट वो है, ठीक है, मतलब कुछ लोगों का काम दिखता है, कुछ लोगों का दिखेगा नहीं। एट द एंड ऑफ द डे people will judge you from money, but if you are feeling happy कि तुमने किसी की लाइफ बचा ली या तुमने किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प किया, कि यू राइट नाउ यू आर गाइडिंग पीपल कि ऐसे भी कर सकते हो, तो दैट इज इनटैंजिबल आउटकम। मतलब तुम क्या बोलोगे कि मैंने इतने लोगों को गाइड किया। मतलब पीपल विल नॉट वैल्यू दैट, इसका वैल्यू नहीं है, राइट। हाँ, तो I mean people may not value that, but if you are feeling good कि हाँ मैंने इतने लोगों को हेल्प किया है, तो I think that is good enough. नहीं, सो एक्चुअली यही था, मतलब अभी हम लोगों की भी, मेरे भी घर पे ये बातें चलती रहती है, तो मैंने एक प्रॉमिस किया कि मैं अपना सैलरी डिस्क्लोज ही नहीं करूंगा, पैसा कितना कमाता हूँ। तो मैंने अपना अकाउंटिंग, मतलब मैंने अपना अकाउंट भी नहीं दिखा रहा हूँ उनको, मैं मतलब नहीं देखना, आप लड़ लो मुझसे, नालायक समझ लो, जितने पैसे मांग लो मुझसे, पर मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। द रीजन इज क्योंकि मुझे पता है द मोमेंट जो उनका पूरे जिंदगी भर जो एक डिबेट चला है कि तुम अगर रिलायंस में रहते, तुम अगर कोचिंग में ही अगर ज्वाइन कर लेते, तुम्हें इतना बड़ा बड़ा पैकेज लग रहा है, and if I can show them now I'm earning more than that, that would be again a wrong thing, because now then I will be successful and I will feel like you are stupid, right? Because आप क्या बोल रहे हो, मतलब
So, जो मैं कर रहा हूँ उसमें अगर मैं एक वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, if I'm हाँ, earning, that's my मतलब that's डेफिनेशन ऑफ that's a सक्सेस। blessing ना, वो अच्छा बात है। पर मेरे लिए क्राइटेरिया वो नहीं था कि मैं उससे पैसा कमा रहा हूँ, मेरे लिए क्राइटेरिया था कि मैं उससे कितना अच्छा, जैसे आपने बताया मेरा मेरा पैरामीटर्स ऑफ इम्पैक्टिंग लाइफ डिफरेंट है, अगर मैं वो कर रहा हूँ आई एम मोर देन हैप्पी। राइट। मुझे क्या लग रहा है आपसे बात करके ना, रियली अमेजिंग जो आपने एग्जांपल दिया कि एक्चुअली व्हाट वी शुड डू ना, वी शुड एक्चुअली हम लोग ने क्या सक्सेस के, जैसे आपने एग्जांपल भी लिया ना इलोन मस्क और स्टीव जॉब्स का, तभी भी मुझे लग रहा था कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि वो सक्सेसफुल है, बट लाइक व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, राइट? तो मैं प्रॉम्प्ट हो रहा था, बट लाइक टाइम बचा नहीं, उसके माइंड में आया, बट लाइक व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ कि शुड एक्चुअली ना like create a small video where we just simply ask these people like what is success for you, और उसमें एक भी वीडियो में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे वो ये बोले कि मेरे लिए पैसा सक्सेस था, बिकॉज आई थिंक ये बच्चों को पता ही नहीं है। ये मुझे वापस से वही लगता है कि दे डोंट नो दैट दिस एग्जिस्ट। लाइक मुझे इतना मजा आया ये बात सुन के कि लाइक द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग is actually helping people save life। मेरा पहला मैंने क्या किया आपको बताता हूँ एक चीज। मेरे 5 मेंटीज जो मेरे मेंटर्स इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड थे, मैंने उनको बोला स्टडी ऑन हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड आई विल आस्क यू क्वेश्चन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ इकोनॉमिक्स। मैं कॉल करूंगा उनको वापस से। मैक्सिमम का यही था हेल्थ इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंडिंग कि यू हेल्प इन प्राइसिंग द मेडिसिन एंड दैट। पढ़ने के बाद भी जो आप बोल रहे थे ना गूगल में पढ़ो, वो पढ़ने के बाद भी यही पर्सपेक्टिव था। So what I felt ना जब आपने वो बात बोला ना कि like for you you are saving like an Australian project is an example, right? But I mean this is really amazing. So very proud of your work. Good. तो मुझे भी नहीं मालूम था कि like it's not only about applying mathematical modeling or economics in the health. एक सेकंड। It's much more. So great, nice. ये और बाकी सब आप बताओ, हाउ इज एवरीथिंग? बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट कब कर रहा है? नेक्स्ट वीक होगा। अभी सोच रहा हूँ थोड़ा, मतलब कोई सजेशन भैया, कोई फॉर्मेट चेंज करूँ क्या? मतलब बच्चे लोगों को ये क्या कितना फायदा होगा कितना नहीं होगा उसका? हाँ ये तो यार आइडिया मतलब मुझे हमें एक वो था कि ये ना मैंने वो शुरुआत में ही बोला था, आई थिंक तुमने रिएक्टेड किया कि यहाँ आंसर्स देखने मत आओ। मतलब लाइफ का टेम्पलेट यही रहा है इंडिया में कि ये क्वेश्चन है और ये आंसर है और रियल लाइफ का टेम्पलेट अलग चलता है। तो पर्सपेक्टिव्स दो। आई थिंक थोड़े से आई वुड से जैसे एक मेरा करियर ऑप्शन भी थोड़ा सा हटके था। इट वाज नॉट ए स्टैंडर्ड करियर ऑप्शन, बट स्टैंडर्ड करियर ऑप्शन में भी स्टैंडर्ड चीजें नहीं होती हैं हमेशा। जैसे आज तुमने देखा कि डॉक्टर्स भी हेल्थ इकोनॉमिस्ट बन रहे हैं, ठीक है? तो जो लोगों ने सोचा होगा कि डॉक्टर्स तो डॉक्टर मतलब पेशेंट्स को ही देखते हैं, उनके लिए हो गया। हाँ, तो ऐसे ही जरूरी नहीं है कि लॉयर्स हमेशा कोर्ट में ही जाके लड़े, ठीक है? एक्टिविस्ट बन सकते हैं, हेल्थ एक्टिविस्ट बन सकते हैं। लॉयर्स भी काफी अलग अलग काम करते हैं। सीएस जरूरी नहीं है कि अकाउंटिंग ही करें। सीएस काफी टाइप की एडवाइसेस देते हैं। जैसे मैंने सिंगापुर में कंपनी खोला, तो उसका कंपनी का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, what should be your holding company, what should be your subsidiary, which one should own what are the tax implications of each form। तो अभी तुम जाके अगर असम में सीएस से पूछोगे ना, आई डोंट थिंक मेनी सीएस विल नो कि क्या होता है। सो वेरी वेरी आई स्पोक विद आदित्य जी जो है ना श्वेता के हस्बैंड, तो उन्होंने बोला कि इस टाइप का काम तो यहाँ पे होता ही नहीं है। मतलब कि उनके तो फैमिली में 30 सीए हैं। सो अब सीए ही बन गए तो जरूरी नहीं है कि मैं अकाउंट से जीएसटी का रिटर्न ही भरूंगा। सीए भी बहुत अलग अलग टाइप के काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल वाले तो काफी लोगों को देखते हैं तो पता रहता है, बट सेम प्रोफेशन के जो नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स हैं उनको भी थोड़ा सा हाईलाइट करो। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। मतलब तो हम क्या कर सकते हैं कि we can have one panel discussion like मैंने हम सब ने इंजीनियरिंग किया है, पर अब हम क्या क्या कर रहे हैं अलग अलग, राइट? या हम सब ने मतलब एमएससी इकोनॉमिक्स ही किया है, बट लाइक मान लो आपने 5 अलग अलग क्या मेरे फील्ड है वो,
हाँ, या तो वो भी एक चीज कर सकते हो। हाँ। तो सेम डिग्री हम्म, डिफरेंट रूल्स, है ना? हाँ, तो 5 सीएस को बैठाओ और पांचों अलग काम कर रहे हो। करेक्ट। और जैसे जैसे इसमें एक चीज और हो जाती है, अभी लोग जैसे 10th 12th के लोग उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे तुम्हारा ये इनपुट कि जेनरिक में और स्पेशलाइजेशन में काफी फर्क आ जाता है। जैसे नोटरी का काम तो करवाया ही होगा कभी ना कभी तो लाइफ में, तो वो पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, 200 300 रुपया देते हैं, करेक्ट। और वो भी लॉयर है, और राम जेठमलानी भी लॉयर है, कपिल सिब्बल भी लॉयर है, ठीक है। वो अम, अगर तुम उस चीज के मतलब वो बन जाते हो, क्या कहते हैं, बी ए स्पेशलिस्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग, तो आपका अलग ही वो क्या कहते हैं, वर्चस्व है, आपका अलग ही प्राइसिंग है, इकोनॉमिक्स ही अलग है, इम्पैक्ट ही अलग है, सब कुछ ही अलग हो जाता है मतलब। तो एंड उन लोगों ने चाहे पॉलिटिकल रूट से दिया हो, चाहे जो भी रीजंस रहे हो उनके ग्रो करने के, मे बी दे वर्कड हार्ड, दे वर नॉलेजेबल, उनकी नॉलेज की रेस्पेक्ट हुई, एंड देन दे वॉन, मे बी दे हैड कनेक्शंस, वी डोंट नो, but they are knowledgeable for sure. We don't know about their connections aspect, but they don't, at least on the law side, they don't say stupid things. या That much we know. They have a very solid grasp on the law. या So at least वो तो अगर जो भी जिस भी डोमेन में काम कर रहा है वो उसका अगर अच्छा बन रहा है ना, तो people are willing to pay a premium on that. People are willing to wait for them. जैसे अभी अमीर से अमीर आदमी भी देखेगा तो डॉक्टर के पास जाके वेट करता है क्लिनिक के बाहर, और वो सर्जन, उसको उसी सर्जन से काम करवाना है क्योंकि उस सर्जन का नाम है, और उस सर्जन के बाहर वो वेट कर लेगा। अभी तो मजा आता है, हमारे सेंटर में हाँ। आते हैं लोग, आईएएस ऑफिसर है, बाहर लाइन लगा हुआ है, हमारे यहाँ बैठे पड़े हैं, दिनेश आएगा बात करेंगे, टीचर आएगा बात करेंगे, तो वो लगता है, वो वाला फीलिंग होता है कि हाँ मतलब आपने एक अगर नीश बना लिया अपने फील्ड में, राइट। तो विल लाइक, जैसे टीचिंग इज आल्सो वन ऑफ देम ना, मतलब हाँ, बच्चों का कुछ भी हो, अभी अगर हेमंतो को अपने बच्चे को पढ़ाना है तो अल्टीमेटली ही विल नीड ए टीचर ना, मतलब राइट राइट, वो तो है। हाँ, सही सही बात है। है, मतलब वो बात एकदम सही है कि अगर आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो तो आई हम्म, थिंक वी शुड विल कम अप विद दिस समथिंग ना, कि हाँ, जनरिक वो एंड तो है। स्पेशलाइजेशन, वो हम ये बोलते रहते हैं एक्सीलेशन एक्सीलेंस की तरफ जाओ, बनना है तो मतलब अगर आपको पैशन, राइट। तो आप अलग ही बनोगे ना उसमें, मतलब अलग ही लेवल पे लेके जाओगे। राइट। वर्ड हमने यूज नहीं किया, जनरिक एंड स्पेशलाइजेशन, एंड दिस ये हाँ, तो एग्जांपल। वो एक, हाँ, कर सकते हो। मतलब एक्चुअली क्या था भैया, अभी हमने क्या देखा ना कि लाइक क्या है कि करियर का जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा का पूरा, वही ब्लंडर है एक्चुअली, हम्म, है ना? जैसे कि आपने बोला था कि 10 साल बाद जो है करियर, उसके लिए हम अभी प्रिपेयर करा रही है, वो इतना रियलिस्टिक बात है ना, तो मैं कभी कभी हम्म, पेरेंट्स को मतलब मैं जानबूझ के ये स्ट्रेसफुली बोलता हूँ ना, तो उनके हम्म, फट लेती है, हम्म, मतलब तो ये एंग्जाइटी क्रिएट हो जाता है पेरेंट को अंदर, बिकॉज उनको हम्म, ऐसा है, पता है आपको, कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप आईआईटी क्रैक कर लो, हाँ आपका लाइफ सेटल है, वो एक खुद को हम्म। सेटिस्फाई करने का भी एक मतलब एक अलग ही मतलब नाटक चल रहा है ना? और और वो, नाटक भी मतलब उनके जमाने में वही था। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, बट भैया हाँ, ऐसा होता है ना कि वो उनके जमाने में ये था, वो अगर पॉइंट है तो ठीक है, हाँ। बट मतलब एक ऐसा हो गया ना कि, एंड आई से इट्स नॉट रॉन्ग, मतलब बट आई एम सेइंग इट्स लैक ऑफ अवेयरनेस, है ना? राइट। हाँ। पर अभी मैं आपको मतलब ये बता दूं, जैसे कि हमारे फैमिली में पता नहीं था ना, बोल के ही हम्म। हम लोग कर पाए जो हमें करना है। नहीं मतलब था भी, मेरे को पापा ने बोला था, जैसे 12th के बाद नहीं हुआ था ना, सीए बन एक जाओ। सेकंड, हाँ, सीए बन जाओ, मैंने फॉर्म भी भरा था 3 कि पढ़ोगे जितना काम तो आएगा धंधे में। तो तो मतलब वो मेरे, अपने पर्सपेक्टिव से ठीक थे, पर उनको मेरे भी लिए नहीं अच्छा पता हुआ, था। मेरे हाँ। को उन्होंने ये नहीं बोला, मेरे को बोला इंजीनियरिंग ही करो। हाँ, मेरे वो केस में मेरे को आपके इसलिए पापा बोला का क्योंकि अलग, मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हो गया। करेक्ट करेक्ट, अगर क्योंकि मेरा, हाँ, आप नोन हो गए ना उनके लिए, हाँ, राइट? तो मेरा अगर सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होता तो शायद तेरे को कॉलेज कोटा वापस नहीं भेजते। हाँ मतलब वो तो बिल्कुल नहीं बोलते, जाओ वो उल्टा ही बोलते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ हाँ, सीए ही बनो अब। हाँ, कि वो मतलब बिल्कुल, somehow I cracked, तो उनको एक टेम्पलेट में ये बन गया कि लिस्ट ऑफ, पहले अटेम्प्ट में नहीं होगा तो सेकंड अटेम्प्ट में होने के चांस हैं। करेक्ट। फिर मेरा नहीं होता तो तेरे को क्या बोलते हैं, ओ देख इन्हें देख, वो 2 अटेम्प्ट कर लियो, कहीं है, 2 साल बर्बाद कर लिया। नहीं पर
वो I आगे will, हाँ, कंटिन्यू भी रहा ना, जैसे मान लीजिए फॉर हम्म, एग्जांपल मतलब उनका आपका होने के बाद भी मतलब देयर वाज लॉट ऑफ कन्वर्सेशन ना कि इकोनॉमिक्स में क्या स्कोप है, मुझसे ही पूछते थे क्या स्कोप है, हाँ, भाई मुझे क्या मालूम क्या स्कोप, मुझे मेरा केमिकल इंजीनियरिंग का नहीं पता, राइट, राइट? तो वो बट भी लाइक है, या मतलब जैसे शिवम का अलग था कंप्यूटर साइंस का, तो हाँ, मतलब एक उसका भी कंपैरिजन होने लग गया कि मतलब हाँ चलो ये लोग तीनों साथ में रहते थे, इनका हो गया इसका नहीं हुआ, मतलब राइट, हाँ, या मान लो आप एक तरीके से देखो, आप मेरे फैमिली में क्या हुआ, मेरे जितने भी बुआ वगैरह सबके लड़के थे, कुलदीप और मेरा साथ में हुआ, उसके बाद किसी का नहीं हुआ आईआईटी, तो पूरा फैमिली राइट, बर्बाद मतलब हाँ बट सब गए ना वहाँ पे, सब गए ना वहाँ पे, राइट, तो अब कहीं ना कहीं हाँ, मुझे ऐसा लगता ही है कि वो सब मुझे ही रिस्पॉन्सिबल भी समझते हैं कि हम्म। यू वो नो तो नहीं, मेरे ख्याल से हमने वो एक पाथ दिखा दिया कि इस पाथ पे भी जाया जा सकता है, दिखा दिया। हाँ, कि वरना इतने ही ऑप्शन थे, ये क्या कहते हैं, सीए बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल, तो सीए वो जॉब पाथ, हाँ, हाँ, मैंने तो शायद 12 तक सिर्फ दो ही सुने थे। आप हाँ, कोटा गए तो मैं कोटा गया, हम्म, बट वो एलन में, वो तो आपको पता ही है स्टोरी, हम्म, आपके आंखों के सामने हम्म, हम्म, बट हाँ, तो ठीक है, या मतलब नहीं, एक्चुअली मुझे तो मतलब शायद क्रैक करने के बाद ही मालूम चला कि अच्छा इंजीनियरिंग होता है, अच्छा ये आए मतलब राइट, हाँ, वही था सही ना, बात है, वो मैंने फिर डिसाइड किया कि हाँ अब हो गया, अब कर लिया जो करना था, अब तो जो करना है वही खुद ही करूंगा। तो हाँ, मेरे को और सही है, मेरे को ये बहुत स्ट्रांगली फील होता है, मेरे घर में किसी को कुछ नहीं पता था, मेरे घर में तो एक्चुअली कुछ नहीं पता था, मतलब अभी भी आप हम्म, देखोगे ना, आई एम द ओनली वन हु हैव टेकन साइंस स्ट्रीम टिल नाउ। मेरे ओके, जितने भी कजिन्स है ना आगे, कृष्णा का तो वो ट्रैक चेंज हो गया, हाँ, उसने इंजीनियरिंग हाँ, करके ड्रॉप कर दिया, राइट, प्रियंका, ऋचा, दिशु सब कॉमर्स, राइट? राइट, आगे का हाँ, मुझे लग रहा है कि साइंस में मुझे तो नहीं, यहाँ पे भी निशा ने किया है बस, हाँ, हाँ, आपके यहाँ पे हाँ, भी सिर्फ दिशा दीदी, निशा ने किया है, करेक्ट। विकी भी कॉमर्स एंड देन एमबीए, हाँ, तो हाँ, वही बाकी वैसे सब कॉमर्स वाले ही हैं, हाँ, हाँ। तो हमारे मतलब मेजोरिटी, हम लोग बहुत माइनॉरिटी वाले में गिर जाते हैं, राइट? तो नहीं तो कई बार क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक जैसे आप बातें कर रहे हो ना, जैसे अभी आपने हाँ, नॉर्मल एक बातें की कि हमें ये हम्म, फॉलो करना चाहिए, फेलियर भी हम्म, एम्ब्रेस, या हाँ, हमारे लर्निंग हुए ना, जो हम थोड़ा साइंटिफिक सोचते हैं ना, दिस बिकम्स हम्म, द बैरियर इन माय लाइफ। मतलब हम्म, आप अदर वे अराउंड देखो कि फॉर एग्जांपल हम्म, तुमको ये करना है, अब मुझे ये हम्म, नहीं करना भाई, ये कोई साइंटिफिक ही नहीं है, मैं क्यों करूं? नहीं, तुम तो ज्यादा पढ़ लिया ना, इससे नहीं करेगा। तो वो तो हाँ, तो इसमें मतलब मेरे मेरा हाँ, शादी भी थोड़ा मतलब सा है, एजुकेशन बहुत बैरियर पड़ा उनके लिए, अगर मेरा इंजीनियरिंग नहीं होता तो मेरा शादी जल्दी हो जाता, मतलब हाँ, वो तो है, बट तो मेरा शादी उसमें तो अब उनका वो हो गया कि भैया लड़का का पढ़ा लिखा के क्या फायदा हुआ उसको। इनफैक्ट आप अगर देखोगे ना कि मतलब तो एक प्रॉपर्टी खरीद ले अपना पैसा से, सब तारीफ पे आ जाएंगे। अभी वही है ना, मेरा फ्लैट है ना, फ्लैट है बोल के जो ऐसा भाई दिनेश कमाता है, मुझे पता है कि क्या करता हूँ, मतलब आई एम सेइंग द मोमेंट आई परचेज अ कार दिस विल बी अ न्यूज रादर देन हाँ, if I got a project where I am training militants to become a maths teacher, तो वो किसी को राइट, मैटर नहीं करेगा, राइट? जो हम कह रहे थे राइट, राइट, त्रिपुरा में हम नहीं हाँ, करते थे, बट राइट, किसी वो को तो मैटर है, नहीं करेगा, मैटर करेगा कि तुमको गाड़ी आया क्या, कितना कमाते हो भाई। तो आई ट्रैवल अ लॉट ना, मेरा मैक्सिमम काम हम्म, तो फ्री वाला ही होता है ज्यादातर, हम्म, तो राइट, वही होता है, तुम जाता है दिनेश इतना फ्लाइट में, तुम्हारा फ्लाइट का खर्चा 40,000 है, गवर्नमेंट पे कर रहा है, तुमको पैसा मिलता है 5,000 एक दिन का, या 3,000 एक दिन का, 2,000 एक दिन का, तो कर क्या रही है, मतलब कैसे पता है क्या कर रहा है हम, है लास्ट ईयर लाइक अराउंड, मतलब लास्ट 1.5 साल पहले मैंने सबको बुलाया, सबको बिठाया, भैया दादाजी चाचू को, बोल दिया कि मैं कुछ नहीं कमाने वाला पैसा, मेरा ऐसे ही है, मतलब मैं संन्यास टाइप का ले लिया। उसके बाद हाँ, उसके बाद मेरा एक्चुअली मैं ज्यादा पैसे कमाने लग गया, आई वाज नॉट वेरी, मतलब एक वो होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सही है। So, हाँ, ठीक अभी तो मेरे को है, बोलता है कितने पैसे कमाता है, मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है द मोमेंट आई टेल देम हाउ मच मनी आई अर्न, दिस विल बिकम लेस। इनफैक्ट ढेकाजिली में एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वो है, मतलब बहुत चर्चा चलता है कि पढ़ लिख के बच्चों ने बर्बादी जो फैलाया है अपनी जिंदगी में या अपने, उसमें कुछ लिस्ट ऑफ लोग है उसमें, मतलब आई एम लीडिंग इन द चार्ट बोर्ड। अच्छा, तो बट अब वो नॉर्मल होते जा रहा है, वो न्यू नॉर्मल हो गया, हाँ, इंटर कास्ट मैरिज एंड ऑल, हाँ, शायद शायद हाँ, थोड़ा नहीं, हाँ, पता नहीं मेरे को, तुम ज्यादा क्लोज हो ठीक है दिल्ली के, बट मैं हाँ, दूरी हूँ, मतलब जब से हाँ, शादी का बात चला है तब से दूरी हूँ, बिकॉज आई नो अच्छा, इट विल स्क्रू मी अप लाइक right, yeah, बेटर। no, but I think maybe now they are, पता नहीं, with all the digital connections, social media, I think maybe they are
embracing what is going on in the world, and they are exposed to at least what has been going on in the world much more than जितना वो पहले दुनिया में देख रहे थे. एटलीस्ट अब वो टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे देखते होंगे कि अरे भाई ये क्या है, हम तो सूट को ही मॉडर्न मानते थे. तो एटलीस्ट वो तो पता नहीं, होगा. अलग प्रोपेगेंडा भी चल रहा है ना, मतलब जैसे आप मतलब वो सब भी है ना बहुत सारा कि क्या चीज प्रोपेगेंडा? प्रोपेगेंडा नहीं पता मुझको. क्या हाँ, बोल? मतलब आपको ऐसे भी मतलब अभी ताई जी से भी आप देखना, मतलब जो यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं, ताऊ जी जो यूट्यूब वगैरह में चीजें देखते हैं, तो वो यूट्यूब का तो एल्गोरिदम है, जो एक आएगा वो आते जाएगा. और हाँ, वो तो पोलराइजेशन तो चल ही रहा है. पोलराइजेशन तो एक अलग ही लेवल का चल रहा है. तो मतलब आए दिन मतलब ऐसा हो ही जाता है कि मुस्लिम तो मरने वाले हैं सारे. आप टीम में आप एक रिक्रूटमेंट ले लो मुस्लिम का, फिर देखो आप. तो मेरे टीम में एक टाइम पे क्या था, वी हैड मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे थे और जैन भी था. तो तो ऐसा हो गया था मतलब कि घर पे आए, पेरेंट्स घुसे, पहले एक आई लड़की, उसका नाम नूरानी, खुशबू नूरानी. उसका नाम भी खुशबू था पर खुशबू नूरानी. दादाजी माँ बढ़िया नमस्कार. टेक्स्ट में जा रहे हैं टेरिसा एंथनी. तो दादाजी घूम रहे हैं ऑफिस में. क्या कर रहे हो भाई? हाँ, ये तो है, चैलेंज है. आप लेके देखो एक मुस्लिम, समझ में आएगा क्या वीडियो का क्या है एक्सपोजर है. तो ये है मतलब भैया, वही है ना, मतलब मैं जो देखता हूँ मतलब पॉजिटिव भी है, मतलब ओपन अप भी हो गए हैं लोग, मतलब वो तो बहुत है ना. कई चीजें और भी, जैसे एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है. जनवरी में गए थे हम लोग इसकी शादी में, कुकी की, प्रतिभा दीदी की लड़की की. तो फरवरी में कंपनी खोली थी सिंगापुर में. डिस्कशन तो 2-3-4 महीने से चल ही रहा था, और मेरे दिमाग में तो 1 साल से चल रहा था कि मुझे करना है. तो वो एक क्या कहेंगे, जैसे पापा से डिस्कस किए, मतलब उनको ऐसा, वो काम आपनों को नहीं, मतलब इन द सेंस कि he felt कि this is for big shots. This is not us. We are common people. We cannot dream like having a multinational company. That is not our dream. That is, we are common people that has. So his point was कि इसमें बहुत technicalities हैं, बहुत international ये है, कैसे समझेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा. It was very unknown, and in his mind it was always कि जो बड़े लोग हैं वो ऐसा काम करते हैं, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, मतलब we are common people, we don't do things like multinational companies. That is not us. And which is fine. I think उनका एक पर्सपेक्टिव था, उनका एक तरीका था, but also because he never got exposure to things which we did. We got a chance to study in IITs. Lot of our batchmates are making multi-million companies. They are raising angel rounds, they are getting VC monies. इन पापा और ने कभी वो एस्पेक्ट तो देखा ही नहीं ना कि ये क्या होता है, कंपनी में 10% बेच के पैसा भी उठाया जा सकता है. वो आप गए नहीं हो ना, अभी नया नया चल रहा है. ये आईटी वाले तो 1000 करोड़ का कंपनी खोल लिया, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये फ्लिपकार्ट, और ये तुम साले क्या कर रहे हो, तुमने कौन सा आईटी किया? तो वो तो खैर मजे ले रहे हैं, बट यू राइट. उनका पॉइंट था कि मतलब they could never think कि as a commoner we can also dream that big. We can also dream, मतलब so I think वो एक generational issue है कि they never got exposed to that, and हमें वो exposure मिला. तो आई थिंक मैं वो एक जेके राउलिंग का है कि there is an expiry date beyond which you cannot blame your parents for setting you in the wrong direction. तो वो मेरे ख्याल से 20-25 साल का जब आदमी हो जाता है तो then he is responsible, चाहे उसका अच्छा हुआ या बुरा हुआ. तो वो फिर मैं था कि मेरे को करना तो है और दिक्कत होगी तो सहलेंगे. दामोदर भैया का कॉल आ रहा है, तेरे सेशन के बारे में पूछेंगे. चलो ठीक है, अपन करते हैं कंटिन्यू बाद में, खाना वाना भी खाते हैं. कैरी ऑन भैया, थैंक यू फॉर टाइम भैया. ओके, चलो कोई नहीं. ओके, बाय.